Rahim, and welcome back to another lecture, I hope, and another exciting lecture from your perspective and from my perspective too. Certainly from your perspective of the public policy analysis class. This is the fifth lecture of the series. And now remember that in the last lecture I told you that there's 5 or 6 lectures, the introductory one, they cover the theoretical stuff, the theoretical basis of public policy and public policy analysis, the things that we are going to cover, different sort of theories, why there is a basis of it, a bit of history, and all that sort of stuff. And then onwards from the 6th lecture, we are going to start with assignments, we are going to start with discussions, then there would be quizzes in between. As I said, I believe I said it in the last lecture that the real fun is set to begin. So hold on to your horses, and hopefully you'd enjoy the ride. Anyway, lecture number 5, let's begin with what we covered in the last lecture. But before we go on, there is one thing that I want to say to you. There is one thing, it's sort of a request, it's sort of an opinion, it's sort of, you can take it as a statement too. You went through a few readings in this course till now, and then you went through a few podcasts. I insisted when we were reading a few articles that you read them carefully. When I say that you read them carefully, I mean that you need to get something out of it. You need to think critically, you need to read carefully what the author is saying, what he is trying to imply over here in terms of public policy. It's not just reading. I've seen students commit that kind of mistake again and again, that they just think that, all right, we'll just go through this stuff because it's reading and whatever. Believe me, you're not going to get much out of it. Then the course kind of becomes, the readings, it kind of becomes routine. It kind of becomes boring. You're just going through the paces, you're just going through the motions and nothing more. That's not the way I teach, that's not the way I interact with students, and that's certainly not the way I would like my students to be. If I tell you to listen to a podcast, if I tell you to read something carefully, I mean it. I mean it because I ask questions of it then. There are certain implications, as we went through quite a few articles, and you would have seen that I also discussed it with you, that there are implications as far as we are talking about public policy. There are some perspectives. You need to get out those perspectives. You need to think about those perspectives by yourself. You need to just not listen to me, what I'm saying over here, or what I discuss about the articles. You need to sit down, relax, and think about it, what you've witnessed, what you've read, what you've observed yourself. Think about it. We talked about conceptualizing a model and then modeling. I'm not asking you to design a model. I'm asking you to sit down, think about this stuff, think about what I've said, and come up with new perspective, different perspectives. One of the things that it's going to do to all of you students is that it's going to help you in your debates. We have, I believe, 3 debates slated for this course, and there are marks for the debates that would be posted online. So once those debates are up, you'd see that the questions would revolve more around critical thinking. What you got out of it, what you got out of what I said and what you read through the textbook, through the slides, or what you got out from the readings, from listening to the podcast and listening to me.
what was your point of view? I'm looking towards your point of view. I'm not looking towards what I said or what the other authors have written. I'm looking towards you. What's your perspective? That is my main concern. That is my main interest. Because by the end of the course, what I'd like you to do is that I would like you to be at the place, standing at a place that where you yourselves are confident enough to talk about public policy with anybody and tell them that, look, this is my perspective. A lot of the times it happens, I've seen it in Pakistan. ये मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ ये बहुत होते देखी अपने मुल्क में कि वो हमारे स्टूडेंट में they lack that confidence. Even बैचलर लेवल मास्टर लेवल करके भी के वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का जो पर्सपेक्टिव होता है वो उनमें नहीं होता. What I'm trying to do is develop that perspective कि जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, जब अपनी क्लास ये कोर्स मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद आप में ये सलाहियत हो, ये एक इत्माद हो, खुदमादी हो कि आप किसी से भी इस पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव ये. बट it's not exactly true that your perspective would be fine and everybody would agree with. I have my own perspective, many perspectives, and quite a few of them I had to, जो मेरा perspective था, I had to go through it again. I had to think about it again because when I talked to people, I found out that there are many things about those perspectives that lack something. So I had to refine those perspectives. जब आप बात करेंगे, when you would think about it, you would conversate with people about these ideas, this public policy stuff, and you'd see that you would get a lot out of it by just talking to or discussing it with other people, by reading it. And that's one reason that I give you a lot of readings. Reading is critical. Again, Pakistan में reading का कोई culture ही नहीं है. हम जिस सिस्टम से, मैं भी इसी सिस्टम से गुजरा हूँ, आप भी यकीनन इसी सिस्टम से, ये रट्टा और गोटे सिस्टम से गुजरे हुए हैं, लेकिन it doesn't help you at all. Believe me, one of the best thing that can happen with a student is in his education career is that when he finishes with his education or finishes with a certain subject, he develops a critical thinking of things. तो ये जो मैं आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ और ये जो मैं आपको रीडिंग्स दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए मटेरियल दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि मैं टाइम पास करना चाहता हूँ या मैं आपको चाहता हूँ कि आपका जो है किसी तरह टाइम पास हो जाए. नहीं, इसमें से सवाल आएंगे, इसमें से मैं आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका एक नुक्ता है जिसे कहते हैं नुक्ता निगाह, या आपके ख्याल में क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जाविया है जो कि इसमें नहीं है और मेरे ख्याल में इसमें होना चाहिए. ये मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों की इस तरह की एक सोच आए, किसी से भी बात कर सकें, अपना एक पर्सपेक्टिव पेश कर सकें. जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव ठीक हो. मेरे भी बहुत से पर्सपेक्टिव गलत थे पॉलिसीज़ के बारे में. मुझे बाद में उनको गो थ्रू करना पड़ा, मुझे बाद में उनको दोबारा रिवाइज करना पड़ा, देखना पड़ा कि उसमें कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ पे कमी रह गई है, और फिर अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड करना पड़ा. दैट इज़ व्हाट विल हैपन विद यू. आई होप सो. दैट इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू, कि आप लोग भी ऐसे उस पर आ जाए कि यू थिंक क्रिटिकली, एंड देन after you find out that maybe perhaps there is something lacking in your perspective about a certain policy, then you are able to mold yourself, you are able to refine your theories, you are able to refine your thinking and come up with something better. So these readings, the podcasts, I have one over here, another one, I have a few readings over here. These are aimed at helping you, not causing you trouble, not bothering you. So when you are reading it, read it carefully. If you are not in the mood, it is my suggestion to you, अगर आप उस वक्त मूड में नहीं होते कुछ पढ़ने के, then take a nap, relax somewhere, and when you are relaxed, then read it. बगैर रिलैक्सेशन के आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कहीं मिक्सअप ना हो जाए. As far as podcasts are concerned, I'm not sure a lot of you, or maybe all of you, have ever had the experience of listening to podcasts, but I listen to them. I listen to them because people are conversating about something, and when I am listening to them,
Not only do I listen to them, but then somewhere around in their conversation I find a point that I think is missing and needs to be discussed more. So then I write it down. I always ask you to look at the article, jot down a few things. That's what I do too, to develop that critical perspective, develop that thinking, develop that mentality that maybe there is something lacking over there and I need to investigate it myself. That is how you become a good thinker and good student. Otherwise, क्लासें तो चलती रहती हैं, तालीम चलती रहती है. मेरा मकसद ये है और होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि मैं इस तरीके से आई एम गोइंग अबाउट द कोर्स इन दिस वे. So hopefully you would be enjoying it too as I am. So this lecture and this one, I have another podcast about another public policy. It's about establishing an institution. We'll have it at the very end, and there is another reading too. There are a few examples. So hopefully you'll be looking forward to it. So let's begin with it. First of all, as the standard operating procedure is, let's begin with a brief summary of the previous lecture. So what did we cover in the previous lecture? We covered some of the remaining models of the public policy, which were group theory, the elite theory, the public choice theory, and the game theory. And we then discussed it in detail. For example, we discussed some of the aspects of it. If you remember, we discussed in elite, for example, in elite theory, I gave you another perspective. Now, again, जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि I want you to get another perspective. Now, when I was reading about this elite theory, I had this perspective on evolution and the evolutionary change. I don't know if you would find it in your textbook or not, but that is my own critical point of view. Okay, there is this what we call the rat race, the race to get ahead of everybody. That's evolutionary too. So in the elite theory, one of my perspectives was that it's got an evolutionary perspective to it too. Evolution has made us into something that we want to preserve what we are. We would like to be higher, but not lower. That's evolution. That's evolution over thousands of years. So when you talk about elite and why they'd like to preserve their status, preserve their status quo, it's not just about, as we discussed, it's not just financial incentive. It's more about preserving their identity, preserving their own group, and preserving the future of their children, whom they would like to be in the same group as they are. Then we went through the public choice theory. I gave you the example of the former Vice President of the United States. We went through an article and how he used his office, a public office, to gain certain favors for himself and his group, the Halliburton group. A vivid example of how, according to the public choice theory, the office, a public office or a high position can be abused in order to gain a certain personal favor. And in the last, we went through the game theory and the game theory metrics. The game theory, as I mentioned, it's all about strategy. It's about two or more than two players and how they are strategizing against each other. I said that its applications are vast and very interesting. I gave you the example of the Cuban Missile Crisis and how both USSR, the Soviet Union, and the United States of America were strategizing against each other in terms of using their weapons, in terms of using their resources. And then I showed you a matrix, a simple matrix. We'll be studying more of it in the coming lectures, which there were two players, yellow and white.
and there were, I believe, 4 outcomes, and we in fact gauged that which one would be the best outcome. The best outcome from the players' perspective would be the one which gives them the biggest material benefit, and that was one of them was that what I would say the ideal from both yellow and white's perspective, the ideal situation where they were getting, each of them was getting their maximum. They couldn't get any more of it. So they were both satisfied at that. That was pretty much it for the last, the brief preview of the last lecture that we studied. And now let's move on to the next lecture. The first slide, different perspectives on public policy. So we went through some very typical perspectives on public policy in the previous lectures. I'm sorry, I think I've repeated the perspectives again. My apologies for that. These included the theoretical foundations and general categorization of theories into 8 groups. Remember, we said that what we do for our convenience is that we divide the public theory or the public choice models into 8 general groups. That is for our convenience. It's not necessarily 8 groups. It may be more than that. There might be subcategories in it because there are so many things covered in it, so many fields, diverse fields come into play. So there might be subcategories. Just like game theory is the subcategory of economics, and it's a field in its own right. Similarly, you can say that there are more than 8 fields, but we generalize them. We generalize them for the reason that it's convenient for our own understanding. But there are other aspects that are not discussed a lot, but may prove to be equally important. In one of the previous lectures, I believe we discussed, and if you remember, I said that there are some benefits that are visible and there are some benefits that are not visible. Those that are visible, they are called intangible. Tangible benefits, those that are not visible are kind of side effects, they are intangible. So what we have over here is that we've covered some of the aspects, but there are some of the aspects that might not be that considered that important and might be invisible to the naked eye or to the observer, but they are there, and they are what people would term as not the most common, the uncommon perspectives on public policy. We are going to go through one of them and discuss its merits and demerits. We are going to read an article about it. Basically, these are 3 perspectives, and I think you can find it in your textbooks too. If you when you go through your textbook about these, do read the whole articles. I've just summarized it for my convenience and for yours, for a basic understanding. But it's quite a lot of reading in your textbook, the Handbook of Public Policy, one that I mentioned in the syllabus. In the discussion of the syllabus, these perspectives, the comparative, the cultural, and the ethical perspective. Now, you need to go through all of them in the book. I'm going to discuss it shortly, briefly, in fact, but there is quite a bit to it. When I went through it, I believe it was quite a few pages. And it had some critical perspectives too. It talked about the shortcomings. It talked about the domains of these uncommon perspectives. But do go through them. I haven't discussed them, but you need to go through them. But before we do that, let us check on today's reading. This is a bit unique case of public policy. Now, this is again just like the uncommon characteristics that we don't talk about. This one is a bit unique too. It's about public policy, but it's a unique case. It's something new that is happening in the Western world and is increasingly gaining in hold. Not many people in Pakistan have heard about it.
In fact, there is no dedicated faculty to it. It's more to do with behavioral economics, or it is more to do with behavior. It involves, this is a reading, this is an article which you are going to read. It involves cognition, it involves psychology, it involves medical assumptions, behavior, etc. And it has been written by a person who wrote a bestseller book. His name is Richard Thaler. The book that he wrote was Nudge. Its title is Nudge. If you ever get the chance, do read it. Get your hands on the book. It's a wonderful book. It's awesome. So he wrote it. He was the co-author of the book. The other was Cass Sunstein. And the Richard Thaler and Cass Sunstein wrote this Nudge, which became a bestseller a few years ago. The article that I am asking you to read now, it relates to public policies, and its title is Public Policies Made to Fit People. Now, this is, just imagine, just think about the topic and how he has phrased it. Public policies, fine, you've heard about it, but here the next line, made to fit people. Made to fit people means that they are tailor-made, just like your clothes are tailor-made to fit you, your body. He's saying that he's advocating policies that are tailor-made to fit people. And the way that he comes about and the way he goes about doing this in designing policies is that he looks at the behaviors of people. He looks at the behaviors of people, he draws up some conclusions from it, and then advocates a certain policy based on those observed behaviors, or what people would do. His book that I mentioned, Nudge, is also all about how you can incentivize a change in behavior for the good, for the welfare of the people. That's why it's such an interesting book. Now, before you read the article, you might be a bit confused. Maybe you need let me just explain in a little bit what this field, behavioral field, is about, what behavior is about, what behavioral economics is about, what behavioral policy is about, in short. देखें, हम सब के कुछ अपनी, आई एम श्योर यू रिकग्नाइज कि हम सब जो है, वी आर यूनिक इन द सेंस, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. हम सब की कुछ अपनी मखसूस आदात होती हैं. देर आर सर्टन थिंग्स वी डू सर्टन वे दैट अदर पीपल्स डोंट डू. हम कुछ, हमारे अपने कुछ तरीक़ाकार होते हैं. हर शख्स के एक तरीक़ाकार होता है सोचने का, जो कि उसके लिए यूनिक होता है, वो उसी का होता है और किसी का नहीं होता. कुछ हमारे ऐसे तौर तरीके हैं जो कि प्रेडिक्टेबल हैं, जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है. जो ये फील्ड है बिहेवियरल साइकोलॉजी की या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की, ये इसी ऑब्जर्वेशंस पे बेस होती हैं कि वो जो रिसर्चर्स हैं वो ये देखते हैं कि एक पॉपुलेशन, एक बंदा या बहुत से बंदे, अफराद, ग्रुप हो गए, पॉपुलेशन हो गया किसी मखसूस एरिया का, उनका बिहेवियर क्या है, क्या उनकी आदात क्या है, उनमें कॉमनैलिटीज़ क्या है, कौन कौन से कॉमन बिहेवियर्स हैं, कौन से ऐसी आदात हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और कौन सी ऐसी आदात हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. देयर आर समथिंग कॉमन इन इट, देयर आर सम थिंग्स दैट आर कॉमन टू इट. अब मसलन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होगी. Behavioral economics जो है, it's a new field, a new subfield in economics, but a very exciting one. At least I know that I am very excited about it. जो कि economics की research करती है behavior को मद्देनज़र रखते हुए. इसमें अब ऐसी ज़बरदस्त और हैरान करने वाली चीज़ें भी होती है कि उसमें ब्रेन के स्कैन किए जा रहे होते हैं, दिमाग के स्कैन किए जा रहे होते हैं. क्यों? वजह यह है कि उसमें जब कोई डिसीजन, if some agent, an individual or a group of people are making a decision regarding, suppose, expenditure, then what they are trying to witness over there with scanning or mapping the brain is that which parts of the brain are active at that time, and which parts of the brain are active at other time, like saving or like
making other economic decisions about, say, hoardings, say, doing anything, economies of scale. So it's a very exciting field. It has a lot to do with mapping how behaviors are formed and what this thing has to do with behavior. Richard Thaler's book became so famous, and these guys, Cass Sunstein and Richard Thaler, became so famous that Richard Thaler is now working for the British Prime Minister David Cameron on public policies and designing public policies that would be beneficial to the people, the overall welfare. So, as I said, it's a pretty exciting field. The British Prime Minister, even he was impressed with it. Even he was impressed with the book. He read the book and asked him to come over and join him and advise him in implementing specific policies based on behavior. So this article that I am going to talk about now and which you are going to read, it's about public policies based on behavior. And he talks about 3 of them. But before I discuss it in a little bit or make a summary of it, again, the standard operating procedure, you can pause the video, go through the article, you can Google it by Richard Thaler, Public Policies Made to Fit People. Go through it, read it carefully. Again, read it carefully of what he has to say. Then come back. You can play the video again and watch my discussion, make your own conclusion. While you're reading it, you can jot down a few points which interest you, which can help you make a perspective, certain perspective about this. So please go ahead, pause the video and go through the article. I hope you've gone through the article and enjoyed it. I certainly do hope so. As I said, these articles and podcasts are for your enjoyment, not for making it difficult, making life difficult for you. But you need to understand these things if you want to be a good public policy analyst and to be ahead of the curve. So anyway, first of all, hope you've jotted down the important insights from the article. That is what I told you to do it. In fact, that is what I always tell you to do when you are reading an article. I hope you've done it. Notice that a person is talking about public policy from a behavioral research perspective, which primarily belongs to psychology. What he tells us is that based on some past experiences, he mentions poor children and their inability to learn a lot of words. In fact, a relative inability, because people of middle class or affluent people's children, they could learn more than them. An observed phenomenon behavior, people not, on another example that he gave was that people were not following their medical routine, not taking medicine at time or something like that. And that there is a need to change public policy for better outcomes in these cases. Now again, notice this thing that he's made quite a few observations. Poor children learning less words. Now this seems straightforward, fine, but just imagine the effort that it went in trying to gauge this thing. कितनी स्टडीज हुई होंगी, कितनी इस पे रिसर्च हुई होगी, फिर क्या क्या इस पे आर्टिकल्स और क्या क्या इसकी रेमेडीज बताई गई होंगी कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो गरीब बच्चे थे, जो कि गरीब ख़ानदान से आए बच्चे थे, वो कम अल्फाज सीख सकते हैं बजाय इसके कि वो जो उनसे जो थोड़े से ज़्यादा अमीर घराने के बच्चे थे या जो अमीर घराने के बच्चे थे वो ज़्यादा अल्फाज सीख सकते थे. वजह क्या थी? अब रिमेंबर देखें आप, ये कितनी एक एस्ट्रूट ऑब्जर्वेशन है और वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं. दे आर डिज़ाइनिंग अ होल पब्लिक पॉलिसी फॉर ब्रिंगिंग द पुअर people's children at par with the other children, so that their ability to learn and their ability to excel is the same as the other children. Can you imagine such a policy in Pakistan? Can you even imagine such a perspective in Pakistan? I can't. I haven't seen one. कि वो किस तरीके से देखें वो सोचते हैं, कैसे वो सोचते हैं, उनकी सोच कहाँ तक जाती है, and how do they go about things. No wonder वो कहाँ पे और हम कहाँ पे.
एनीवे फिर उसने एग्जांपल दी कि पीपल नॉट फॉलोइंग देयर मेडिकल रूटीन। ये एक और ऑब्जर्वेशन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने की कि लोग जो उनको डॉक्टर कहते हैं कि जिस वक्त पे गोली ले, जिस वक्त पे मेडिसिन ले, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसकी वजह से हुकूमत को नुकसान हो रहा था। उनको एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, मेडिकल सर्विसेज, जिसका खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ता, वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तो देखें, there was something, there was a need. Now there was a demand not from the people side but from the government side to come up with a policy to control this expenditure, to decrease this expenditure. And in this case, they called over Richard Taylor to come over and see what they can do about it. And he talks about it. One interesting aside of making informed judgments based on behavior is that it will save us a lot of resources. Since we know how or why the target population behaves, we can implement a policy knowing very well what the reaction of the target population will be. अभी मैंने बात की रिसोर्सेज सेव करने की, अभी मैंने ये बात की कि ये बरतानी हुकूमत ने खुद एक उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि जी हमें कोई ऐसी पॉलिसी बताई जाए जिसकी वजह से जो हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है ये कम हो सके। तो देखें, इसमें रिसोर्सेज सेव करने की बात आ रही है, इसमें पैसा बचत करने की रिसोर्स एक हमारे पास एक जरिया है, उसकी बचत की बात हो रही है कि कोई ऐसी पॉलिसी बने कि उसके ज़रिए उसकी बचत हो सके जो कि हम इस तरह खर्च कर रहे हैं। अब इसमें बिहेवियर का क्या काम है, आदात व अतवार का क्या काम है? काम यह है कि अगर हमें पता हो एज अ पॉलिसी मेकर, अगर मुझे पता है कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यू गाइज लाइक वाचिंग द वीडियो, अगर मुझे पता है कि आपकी आदात क्या हैं, तो अगर कोई मैंने पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन करनी है, सपोज पब्लिक पॉलिसी की एजुकेशन जो है वो किसको किस तरीके से दी जाए और मुख्तलिफ लोगों को किस तरह ग्रुप किया जाए फॉर बेटर आउटकम्स, तो उसमें बहुत सी वो बेस होगी इस ऑब्जर्वेशन पे कि हाउ यू बिहेव, आपकी लोगों की आदात क्या है, मुख्तलिफ लोगों की कैसी आदात हैं। तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों की आदात एक जैसी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग रिसोर्सेज, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इस केस में उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने ये आदत एक नोट की कि बहुत से पेशेंट, खास तौर पे जो बुजुर्ग पेशेंट थे, वो अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ले रहे थे, अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रहे थे, और उनकी वजह से उनको मसले पैदा हो रहे थे। चूँकि वहाँ पे हेल्थ सिस्टम हुकूमत के अंडर काम करता है, तो अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है तो वो उसका मतलब है कि खर्चा हुकूमत को ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये एक एडिशनल खर्चा था जो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग, क्या करें। इसमें रिचर्ड टेलर ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि जी उनकी आदात देखें कि वो क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं, किस वक्त मिस करते हैं, किस वजह से मिस करते हैं। और फिर उसमें उसने एक सजेशन आई बिलीव आर्टिकल में उसने दिया था कि इसके साथ करना क्या चाहिए। नाउ अगेन नोटिस दैट, रिमेंबर दैट, उसने कहा था कि पॉलिसीज मेड टू फिट पीपल। अब उसने ये नहीं कहा कि ये पूरी पॉपुलेशन पे ही इम्प्लीमेंट कर दो, उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ एक टेलर मेड पॉलिसी बनाई है फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। वो कौन है? वो है वो लोग जो कि अपनी दवाइयाँ वक्त पे नहीं लेते या अपनी मेडिकल रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे। और किस चीज़ पे बेस किया उसने अपने पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन? उनकी बिहेवियर पे एक ऑब्जर्वेशन की है, देखा है कि ये इनकी आदत क्यों है, क्या वजह है, कहाँ पे मसला है, तो उसको देखते हुए उसने एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दी है। ये नहीं कि बस उठा के जो है लिख दिया कि यहाँ पे हमने मेट्रो बनानी है या यहाँ पे हमने 6 लेन की सड़क बनानी है, तो और किसी से पूछा नहीं और ये नहीं सोचा कि इससे पहले जो बनाई थी उनका आखिर में क्या अंजाम हुआ, कुछ भी नहीं। एनीवे, हमें इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें पता होता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच द टारगेट पॉपुलेशन इज। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू स्टेटिस्टिक्स, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सैम्पलिंग, एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना, कि हम किस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करें, किससे वो सर्वे करना हो, किससे करें, क्योंकि बहुत सौ का जवाब किसी तरह भी हो सकता है। अब सपोज अगर एक कोई सर्वे हो रहा हो कि दिन में कितनी दफ़ा मशरूब पिया जाता है, अब बहुत से लोग शायद ऐसे हों, एक मखसूस एरिया का सिलेक्ट किया जाए, उसमें शायद वो मखसूस जो मशरूब है वो पिया ही ना जाता हो,
तो इस तरह पैसे भी खर्च हो गए, रिसोर्स भी खर्च हो गया, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो इसमें ये होगा कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, आदात की बात कर रहे हैं, तो यू वुड प्रीटी मच नो, हमें ये पता होगा कि ऑब्जर्वेशन से कि कौन कौन है जो कि उस मखसूस उसको शरबत को या मखसूस ड्रिंक को इस्तेमाल करता है, उस तो वही टारगेट पॉपुलेशन होगी। आप उसी बंदे से पूछेंगे जो कि वो जूस पीता है। ये नहीं होगा कि आप हर बंदे से पूछ रहे हैं, जो इनमें से अक्सर पता चले कि 20 पूछे हैं तो 10 पीते ही नहीं है, और 10 जो है वो पीते हैं, उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो इसका मतलब है कि 10 बंदों पे पैसे ज़ाया किए गए हैं। दैट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नॉट फॉर जस्ट पब्लिक पॉलिसी परस्पेक्टिव बट फॉर the private sector too. Cass Sunstein and Richard Thaler, they work with the private sector too. They advise them. They advise governments, but they advise the private sector too. This is another interesting perspective because there is no such thing as cost-benefit analysis or a sophisticated software involved. It's just behavioral psychological research based on observation and simple data. अभी जब हम मज़ीद आगे जाएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे, मसलन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं कोई नतीजा अखज़ करने के लिए। वी विल सी दैट once we go ahead in other lectures we'd go through techniques like cost benefit analysis or or in real world there are sophisticated softwares used to come up with the result of a specific policy. No such thing over here. No cost benefit analysis, no sophisticated software. It's all about behavior. It's all about one thing. It's all about psychology. It's all about observation. Thus, as I stated earlier, there are many ways of analyzing a public policy. By using behavior, he addresses 3 important public policy fields: education, health and domestic वायलेंस। अब देखें इसमें ही हैज़ डिस्कस डोमेस्टिक वायलेंस टू। हर रोज़ खबरनामे में आप ये खबरें हम लोग भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर अच्छी कोई खबर सुनने को तो नहीं मिलती, हर रोज़ ही कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। उसमें एक मसला ये भी होता है कि मार दाड़ और डोमेस्टिक वायलेंस के जो मसाइल होते हैं। कुछ ईयर से पहले यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि एक खातून को उसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया था। अब ये वायलेंस का केस है। अब देखें कि उसमें रिचर्ड टेलर ने उस चीज़ को भी डिस्कस किया और उस चीज़ के बारे में भी ऑब्जर्वेशन की है। नाउ डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट आई मीन टू से, जैसा कि हम शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि एक बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी आ गया, तशद्दुद जिसे कहते हैं, उसके लिए भी एक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत से ममालिक में है, पाकिस्तान में नहीं है कोई ऐसा पब्लिक पॉलिसी। But Richard Thaler discusses that in his article. So I hope really that you enjoyed another very interesting read, and this one was different because it was based on behavior. It wasn't based on the normal or the typical of what we study or what we discuss. It is based on behavior, which is rather something new for you guys. So we said that there are certain uncommon perspectives of the public policy. Now this one, the first one, is we'll probably be discussing the next 2 in the next lecture, but anyway the first one is the comparative public policy analysis. Now the comparative public policy analysis, why a comparative public policy analysis? What's the reason for it? Its main strength is that it allows us to study counterintuitive arguments that tend to defy embedded examples or logic. Now, by counterintuitive arguments, some arguments are intuitive. You think that, okay, this is the established norms, since this is the established wisdom, this is intuitive too. Counterintuitive means that there is a different aspect to it, maybe something counter to it, which we haven't considered. So that's why it's counterintuitive. That tend to defy embedded examples or logic. So it's uncommon. That is why it's uncommon, because it tends to defy the embedded logic, जो कि हम already एक अपना ज़हन बना चुके होते हैं किसी बात के बारे में। इस तरह की comparative public policy analysis हमें इस चीज़ में मदद देती है
कि कुछ हमें ये बात पता चले कि ऐसी मिसालें हैं कि जो उस चीज़ को डिफाई करती हैं, उस जो हम सोचते हैं कि यही ठीक है और इसी तरह होता चला आ रहा है, वो हमें पता चलता है कि नहीं, अब इस तरह नहीं हो रहा, अब कुछ और हो रहा है. These are counterintuitive arguments, counterintuitive examples in the world. In other words, it helps us to compare similar pattern or intention policies across geography and see whether these meant anything or is there any lesson in it. क्या मिसाल हो आपको एक सिंपल, अगेन एक सादा सी मिसाल देता हूँ. आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में वेलफेयर प्रोग्राम सारे ममालिक में चलते हैं. पाकिस्तान में भी वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ज़कात प्रोग्राम है. इसी तरह आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया का ऑब्जर्व कर लें, वहाँ पे भी 3-4 गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स शुरू किए हुए हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए. इनकम, वो जो सपोर्ट होती है, जिसे आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिल रही है, कैश और नॉन कैश, इट्स अनदर थिंग, लेकिन वो एक सपोर्ट है. दीज आर पार्ट ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स, ओवरऑल वेलफेयर. अब ये देखें, वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं वो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है. आपको तुर्की में भी मिल जाएंगी, आपको यूरोप में भी मिल जाएंगी. यूरोप में बहुत अरसे से हैं, अमेरिका में बहुत अरसे से हैं. अब ये एशियन रीजन में जो है वो काफ़ी अरसे बाद आना शुरू हुई है. इट्स काइंड ऑफ रीसेंट एडिशन. तुर्की में देख लें, ईरान में देख लें, इंडिया में देख लें, श्रीलंका में देख लें, और पाकिस्तान में देख लें. अब देखें, इंटेंशन एक ही है. जैसे जिस तरह अभी मैंने बात की ना कि इट हेल्प्स अस टू कंपेयर सिमिलर पैटर्न पॉलिसीज और सिमिलर इंटेंशन पॉलिसीज. सिमिलर पैटर्न ये है कि देखें, ये दीज आर ऑल मेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ असिस्टिंग द पुअर पीपल. द इंटेंशन इज द सेम, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि आउटकम्स डिफरेंट होते हैं. पाकिस्तान में मुख्तलिफ होगा, अफगानिस्तान या और इस तरह के ममालिक हैं नेबरिंग, भारत में मुख्तलिफ है, चाइना में मुख्तलिफ है, अमेरिका में मुख्तलिफ है, यूरोप में उससे मुख्तलिफ है. तो देखिए, इंटेंशन सेम है, लेकिन जो उसका आउटकम होता है ना जी इंटेंशन का, वो मुख्तलिफ होता है. तो what we are doing with the comparative public policy analysis is that it gives us an insight. It gives us an insight कि जो यहाँ पे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही है वो तो भाई तकरीबन वही है कि जो और ममालिक में इम्प्लीमेंट हुई थी. हमने भी उसी को फॉलो किया है या वो हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उधर कुछ और हो रहा है, इधर कुछ और है. तो कंपैरेटिव एक एनालिसिस जो होता है वो हमें एक इनसाइट देता है कि अगर वहाँ पे एक चीज़ मुख्तलिफ हो रही है और वही चीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से हो रही है, तो उसकी वजूहात क्या हैं. What are the underlying reasons that make the outcomes in this field different, or the implications of policies different. अब मैंने दूसरी इसमें एक मिसाल दी है, सिंपल एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ रेलवे इन पाकिस्तान एंड रेलवे इन इंडिया. अच्छा, अब दोनों ममालिक के पहले आपको आई एम श्योर यू वुड नो कि ये एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन था. कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि ये जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत था, उस ज़माने में रेलवे शुरू हुई थी. ये 1800 की बात है, 1850 के बाद या 1840 के अराउंड. उस वक्त चूँकि पाकिस्तान इंडिया एक ही था, बड़े सगीर एक ही था, तो वो पूरी रेलवे लाइनें बिछाई गई, पूरी एक रेल नेटवर्क बनाया गया. जब आज़ादी के मौके पे 1947 में दोनों अलग होगी, इंडियन रेल अलग, पाकिस्तान रेल अलग. आ जाए इस वक्त में, अब इस वक्त में हालात ये हैं कि हम तो जब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिछले 10-20 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की रेलवे जो है वो खसारे में ही है. वो कभी उसके फायदे में नहीं होती, कोई हुकूमत को उससे फायदा, लेकिन फिर भी हुकूमत उसको चलाई जा रही है. दिस इज अ वेरी विविड एग्जांपल ऑफ बैड पॉलिसी, bad public policy. It's a white elephant. It's eating billions of rupees every year. It's costing us, the government and the national exchequer, the people of Pakistan, billions of rupees every year without any hope of becoming better. But yet the government still continues to persist with it.
So if it's not a bad policy, then what would a bad policy be like? And then you have the railways compared to railway in India. Since last 10 or 15 years, the railway department in India has been a gold mine. It has been earning them billions of rupees every month, not just a year. So देख लें, वही बात आई कि इंटेंशन वॉज द सेम, इरादा एक ही था कि लोगों के लिए सफ़र की सहूलत, ठीक है, बट द आउटकम्स आर डिफरेंट. बोथ आर ट्रांसपोर्ट, but the outcomes are very different for both of them. One is gobbling up money, R1, and it's extremely inefficient. The other one, with a similar infrastructure which the British had built, with similar lines and similar infrastructure, it has gone places, it has gone miles. It is earning billions of rupees every month. It's the biggest rail network in the world, I believe, and it's pretty efficient. So what is happening over here in comparative public policy analysis is that we are comparing these examples and trying to learn some lessons, that why this disparity, despite the fact that the nature of these two things are very similar. And mind you, you might even, as I have many times, come up with this conclusion that it's useless to compare those two things because circumstances are completely different in one environment and circumstances are completely different in another environment. So that is why it's not applicable. Maybe it's not applicable over here. Certainly we will read something that will give you an idea of what I am saying. But anyway, for that to occur, let's just wait a moment and go through this thing. The textbook, आपकी textbook में एक मिसाल है. The textbook contains Jamaica's example of establishment of a good telecom network due to proper regulation. But in Pakistan, we have an opposite example where regulation in telecom sector led to a loss of millions of dollars. An investment and government had to ultimately withdraw that policy. इस सिलसिले में we'll go through an article which was written by Ali Salman some years back. It's a very interesting article because he had asked the government not to follow that policy because it would be futile, but the government did. But 2 years, 3 years afterwards, after realizing a loss of millions of dollars, they have finally withdrawn that policy. Too late. But anyway, we'll study it. So now in Jamaica, it's one of the islands in the West Indies. In Jamaica, they had established a very good telecom network, and one of the reasons that they had been able to establish such a good network was the fact that there was good government regulation and good government backing. But in Pakistan, you can see again what is the opposite happened. When government stepped in the telecom sector and started regulating it, it did it in a very bad way, and its stepping into this sector proved to be not very good public policy. They had to withdraw it recently, but anyway, the damage has been done. That's why one thing about public policy analysis is that you have to beforehand, before you drop a policy, you have to look at the history of it. You have to gauge whether there is something wrong with this policy and whether it should be applied or not applied. So let's move on to the next slide. Remember that the conditions do not remain the same since the variables in an equation may change. So comparison provides us with a kind of natural experiment in light of inability to conduct real experiments. जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ, हालात एक जैसे नहीं रहते. तो एक वक्त में अगर किसी ने एक कंपैरिजन किया है, इट माइट वेरी वेल बी कि अगर साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद वो एक कंपैरिजन करता है तो वहाँ पे बहुत कुछ उसको मे बी बदला हुआ नजर आए. एनीवे, जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, व्हाट इट हेल्प्स अस टू डू इज कि वो, चूंकि हम इस तरह के रियल एक्सपेरिमेंट्स लोगों को बंद करके कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमें एक जाविया देता है, एक नुक्ता नजर रहता है कि दिस इज व्हाट हैपेंड विद द पॉलिसी and this is what happened over here and this is what happened over there. So these are the lessons to be learned. What we are doing is drawing inferences, which means a conclusion. Now, used extensively and in what we call cross-country, cross-time and cross-cultural studies. When we're talking, we are saying
क्रॉस कंट्री, क्रॉस टाइम, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम सिर्फ अपने मुल्क के अलावा जो है बाकी ममालिक में की भी बात कर रहे हैं जो कि टारगेट होते हैं किसी भी रिसर्च का. इट्स क्रॉस कंट्री. For example, famous textbook of Robert Barrow and Xavier Martin on economic growth contains scholarly research on the dynamics of growth across nations. They consider several factors and take their data through the sophisticated testing techniques to come to their conclusion. अब ये economic growth की जो है इक्तिसादी तरक्की की एक बड़ी मशहूर जो टेक्स्ट बुक है, ये लिखी है रॉबर्ट बैरो, जेवियर सलाई मार्टिन. ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, इक्तिसादी माहिर हैं, इन्होंने लिखी है, इकोनॉमिक्स में लिखी है. और ये जो उन्होंने जो जितने भी सबूत पेश किए हैं, मुख्तलिफ ममालिक को कंपेयर किया है, उनका डेटा कंपेयर किया है, उनके हालात कंपेयर किए हैं, उसमें उन्होंने जो है ये क्रॉस कंट्री रिजल्ट्स जो है इस्तेमाल किए हैं. बहुत से अवामिल को उन्होंने देखा है और फिर कुछ टेस्ट जो है इकोनोमेट्रिक्स टेस्ट करके वो कुछ नताइज पे पहुंचे हैं. दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ द क्रॉस कंट्री स्टडी. इज अ वेरी गुड बुक. Even if you are not an economist, if you ever get the time, do go through the book. It's a very good one. It will give you a good understanding of the process of economic growth, at least from the GDP and material perspective. These comparative studies are helpful on several counts as discussed above, but we may be very careful in our discussion and conclusions. This is simply because conditions across the country, especially at the micro level, vary tremendously. ये मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो आपकी टेक्स्ट बुक है, व्हेन यू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड टू यू, उसमें आपको एक मिसाल मिलेगी. उसमें एक चीज़ मेंशन की होगी उन्होंने कि मैनिपुलेशन ऑफ डाटा. अब ये चीज़ बीइंग इन पार्ट ऑफ ऑफिशियल सर्कल्स फॉर सम टाइम एंड बीइंग इन टच विद देम, लुकिंग एट द वे ऑफ वर्किंग, आई कैन वाउच टू द फैक्ट दैट क्वाइट अ बिट ऑफ इट गोज ऑन ओवर हियर. मैनिपुलेशन ऑफ डेटा की जहाँ पे बात की जाती है, उसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं उनको तब्दील करना ताकि वो अच्छे लगे देखने वाले को. दिस स्पेशली हैपेंस इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर्स, for the purpose that to whom that data is being represented may feel good about it and say that look, this is good performance, but in fact what might be happening is that it's fudge data, it's bogus data, and it does not tell of the reality. It has happened in many countries, not just Pakistan, and it's something unfortunate. What it does, one of the biggest harms in fudging data is that it dilutes the credibility of studies. अगर कोई स्टडी हुई है, मसलन मैंने आपको मेंशन की कि जो बुक इकोनॉमिक ग्रोथ की मैंने मेंशन की, रॉबर्ट बेरो और जेवियर मार्टिन की, बड़ी मशहूर. कल को अगर पता चलता है कि बहुत से ममालिक ने उसमें जो डेटा दिया है वो अपनी मर्जी के मुताबिक दिया और जो कि असल डेटा नहीं है, जो असल हालात के मुताबिक नहीं है, तो फिर रिजल्ट्स जो उन्होंने अखज़ किए हैं, जो नतीजे उन्होंने अखज़ किए हैं, तो वो मशकूक हो जाएंगे. वो बड़ा उनके लिए आप खुद सोचें कितना बड़ा सदमा होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस चीज़ पे. एनीवे, मीनवाइल रीड द blog entry titled Useless Comparisons at this blog, the ones that I've just mentioned. You're going to come across some examples of why comparison in certain circumstances are a waste of time and not a good strategy. ये जो मैंने ब्लॉग मेंशन किया है, फॉलो इट, गो ऑन इट. उस पर एक एंट्री होगी जिसका टाइटल होगा यूजलेस कंपैरिजन. अगेन उसको गौर से पढ़िए कि उसमें क्या बात करने की कोशिश की जा रही है. उसमें जो ऑथर है एक चीज़ को रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहा है. एक आर्टिकल लिखा गया था न्यूज़पेपर्स में, सेम पर्सन, रिटन बाय द सेम person, same author who had written Pipe Dreams, which we studied, Dr. Farooq Sareem. But I thought it was a pretty bad article by him. तो उस पर अच्छे खासे कमेंट्स हैं, उस पर ऑब्जर्वेशंस है कुछ उस पर इस ब्लॉग स्पॉट पे, इस एंट्री में. So please do go ahead, read it. It's not a big one, it's maybe 5 at most 10 minutes, so you can pause the video, go ahead, read it, and then come back, jot down a few points. I hope that you've gone through the blog entry and you've enjoyed it. I hope you have jotted down a few points about it.
जो कि आपने एक चीज़ उसमें नोटिस की होगी कि ये उसी बारे में कि जो मैं कह रहा था कि कभी कभार कंपैरिजंस जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस आर नॉट द सेम. सो दिस ब्लॉग एंट्री वाज अबाउट those kinds of useless comparisons that our people tend to do. So then the question remains, what's the use of comparisons? Learning lessons and drawing general conclusions, not specific ones. These general conclusions may apply to a country or not. When we are doing comparative analysis of public policies, we are just drawing general inferences or overall inferences or conclusions. These are not specific inferences. So what I mean to say is that they might apply to one country but not to the other country. They might apply to one area but not to the other area inside a country. They might apply to one particular group but not apply to another group because the dynamics of that group are different. So what you can do with comparisons is that you can make some general conclusions, but to be able to come up with very precise conclusions, you need very precise data, micro level data, individual level data, household level data. That is a bit more difficult and not the easiest of the tasks. Don't forget to go through the readings of the textbook on this stuff, especially the domains of comparative understanding. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा लेक्चर के शुरू में जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि तीन ऐसी थ्योरीज हैं जो कि डिफरेंट लेके वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैंने आपको कहा था कि गो थ्रू द बुक, उसमें काफ़ी लिखा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में एक मेंशन की गई इन तीनों चीज़ों के बारे में, डोमेन्स कुछ हैं इन तीनों चीज़ों के, तो go through it, read it, it's important. Last but not the least, there is an attached podcast again for you, as I told you in the beginning of the video. This time it deals with the birth of an important institution in the United States due to result of the public policy. ये भी एक public policy थी जो उनकी कांग्रेस ने पास की थी. एक सेंट्रल बैंक, उन्होंने एक बिल पास किया था 1906 में 1907 में फॉर द एस्टेब्लिशमेंट उनका सेंट्रल बैंक, जैसा कि हमारा स्टेट बैंक है, उनका भी एक स्टेट बैंक है जिसको वो यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व कहते हैं. इस लेक्चर के साथ ही मटेरियल में वो आपको पॉडकास्ट भी मिल जाएगी. अगेन पॉडकास्ट है, उसमें आपको शायद थोड़ी बहुत म्यूजिक भी मिल जाए, एक डिस्कशन मिलेगी इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में भी, वो भी सुनिएगा. इट्स इंटरेस्टिंग. Won't ask questions about it, but it's interesting that what kind of indicator, an economic indicator, are they discussing. Then they will discuss the reasons why that Federal Reserve was established or the central bank was established and what it has achieved and why it came into being. What were the reasons? Now, of course, you're going to listen to the podcast and I hope you do, but before that, before you listen to the podcast, I want to mention some basics of central banking and banks and what this whole system is about. एक मुल्क का जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, उसमें होते हैं ये बैंक्स, मुख्तलिफ कंपीटिंग बैंक्स. मसलन यहाँ पे हो गए बड़े बड़े बैंक्स, अबीब बैंक, एलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक वगैरह वगैरह. इन सब के ऊपर जो एक मदर इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है एक सेंट्रल बैंक. अब पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं. इसी तरह हर मुल्क में मैं नहीं जानता कि किसी मुल्क में शायद नहीं है, लेकिन शायद ऐसा मुल्क हो, नॉर्थ कोरिया में नहीं है शायद, लेकिन एनीवे तमाम ज़्यादातर ममालिक में आपको एक सेंट्रल बैंक मिलेगा जो कि इन बैंक्स, सारे बैंक्स का सरबराह होता है. अब उसके काम कुछ होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी चलाना. यू डोंट नीड टू गो थ्रू व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज, नॉट एट दिस मोमेंट, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट it has the responsibility of supervising the banking system within a country. कि एक जो बैंकिंग सिस्टम है किसी मुल्क में उसकी सुपरविजन करना और उसके मुताबिक फैसले करना कि आया कहीं चीज़ कोई मसला है, कोई बन रहा है बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, तो फिर उसको करेक्ट करना.
Now we in this podcast they are talking about the United States Central Bank that came into being in 1907, I believe, or after that, I don't remember the exact date, but I think it was in early 1900s. United States' own bank was a bit late in coming. Britain's central bank was established in late 1600s. France had established its central bank in early 1800s. So America was a bit late in coming to this realization that we need a central bank. And why is there a requirement for a central bank? Why did countries want to establish a central bank? When one of the reasons, as I mentioned, one of the main reasons is that there needs to be a supervisor of this system. There needs to be a regulatory authority of banks to protect the consumers, to protect the depositors. तो वो एक सुपरवाइजिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. लेकिन बड़ी वजह जो कि जिसकी वजह से कोई सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश किया जाता है और मुख्तलिफ ममालिक में इस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे ख़ास तौर पे वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में बड़े जो इक़्तिसादी ताकतें हैं, उधर सेंट्रल बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि बैंक्स फेल्ड एंड देयर वाज अ क्राइसिस ड्यू टू इट. There were bank failures and it resulted in many sorts of crises. Example for credit crisis, पैसे नहीं मिलते थे, पैसे खत्म हो गए थे, इकोनॉमी से गायब हो गए, because people used to ration it. In that sort of cases, banks used to go bankrupt, and there were quite a few negatives of it. One of the negative was that economic output used to decline, and it took a severe hitting. So in those cases, one of the solution, in fact not one of the solution, but the biggest solution that authorities could come up as a part of public policy was, now remember I say public policy because the failure of the banks hurt the economy, and if it hurt the economy, its output, but one of the things that happened was that it meant less job opportunities for the people. So obviously that's is a decrease in welfare. So that's why where this public policy about establishing a welfare central bank comes in. Now what happened is that quite a few of the countries experienced bank failures. Bank failure या bank run जो है वो किस तरह होता है? Suddenly, suppose I am giving you a very simple example that there is this news that a nation is going to war with another nation, कि जंग छिड़ने वाली है. What will people do? People, what they usually do is that they go to the banks and withdraw all their money. They have demand for money and they just want to keep it, to hoard it. वो उस चीज़ को जैसे और चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है जंग में, इसी तरह पैसों की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है. तो सारे जब लोग एक साथ ही बैंक जाते हैं, बैंक्स के पास अक्सर इतने पैसे होते नहीं हैं. अगर बैंक का तरीक़ाकार ये होता है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक्स का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर वो 10 रुपये रखते हैं डिपॉजिट में, सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 5 रुपये जो है वो दे देते हैं बाहर कर्जे के तौर पे, 5 रुपये अपने पास रखते हैं, क्योंकि सारे लोग एक साथ पैसे लेने नहीं आते. उस कर्जे पे फिर वो कमाई करते हैं जो कि वो लोगों को देते हैं. 5 की बजाय वो 7 रुपये टोटल उसकी कमाई हो जाती है, यानी 2 रुपये मुनाफा हो जाता है. एनीवे, होता ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह की जब कोई अफवाह फैल जाती है कि जंग होने वाली है, जंग छिड़ने वाली है, या इस तरह की कोई और नेगेटिव अफवाह, तो सारे लोग इकट्ठे ही बैंक की तरफ दौड़ के अपने पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं. बैंक्स के पास इतने पैसे होते नहीं हैं और वो अपने ऑब्लिगेशंस पे, ऑब्लिगेशन ये होती है कि उसने एक जो जिसने अपना खाता बनाया हुआ है उसको पैसे सारे वापस करने हैं उसी वक्त पे, जिस वक्त भी वो डिमांड करे. अगर बैंक उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता तो इसका मतलब है डिफॉल्ट और फेलियर ऑफ द बैंक. इसे बैंक रन कहा जाता है कि जब सारे लोग ही एक साथ आ जाए, अपने पैसे निकलवाना चाहे और बैंक के पास इतने पैसे हो ही ना, क्योंकि उसने कुछ पैसे लैंड आउट किए हुए हैं, कर्जे के तौर पे दिए हुए हैं, वो उसके पास है नहीं. ये बैंक रन होता है. इस तरह के बैंक रन तारीख में बहुत मिल जाएंगे. 1907 में इसी तरह का एक बैंक रन हुआ, एक बैंक फेलियर हुआ अमेरिका में, जिसकी वजह से बड़ा शदीद एक क्राइसिस आया इकोनॉमी में और बैंकिंग इंडस्ट्री में. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने फैसला किया कि एक सेंट्रल बैंक कायम किया जाए. सेंट्रल बैंक ये करता है कि अगर इन केस कोई इस तरह लोग आ जाते हैं, कोई देयर इज अ बैंक रन, व्हाट द सेंट्रल बैंक डज इज दैट इट गिव्स इट्स बैकिंग, इट गिव्स इमीडिएट liquidity, which means that
If there is a requirement for cash, immediate cash, central bank, what it does is that it takes out money from its own reserves and gives it to the banks to meet the requirements of its customers, the people who have account over there. So in this way, a bank run is prevented, and also the ensuing negative side to the economy or negative effects to the economy. So that is the reason of the establishment of central banks. Now, when you listen to the podcast and listen to it very carefully, you'd recognize same kind of things. You listen pretty much to the same kind of things. But again, do listen to it very carefully. But before you listen to it, it's time to say goodbye. It's almost the end of the lecture. And before we end the lecture, few short notes, short revisionary notes that what we covered in this lecture. We covered some of the unconventional theory, unconventional perspectives. We only covered one of it. It was about comparative analysis. How and why of we compare situations around the world or programs around the world. Then we read a few articles. You read one of the blog entries which was about why comparisons can be useless sometimes and might not be beneficial. So I really hope you, and in the last we discussed central banking, and the podcast is about central banking. So I really hope you again enjoyed the lecture, and before you come over to the next lecture or start viewing the next lecture, be sure to go through the podcast. Until then, Allah Hafiz and goodbye.